हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आज हम पिछली क्लास का जो डिक्टेशन वाला पार्ट है वो आज हम करेंगे। जो दो चैप्टर्स हमने करे थे, दो मतलब एक चैप्टर की दो एक्सरसाइज जो करी थी, उन दोनों का डिक्टेशन जो है वो अब हम लिखने वाले हैं। जहाँ तक मुझे ध्यान है 85 और 86 नंबर का जो एक्सरसाइज है उनका कंबाइंड करके एक डिक्टेशन हम लिखने वाले हैं, जिसमें स्पीड रहेगी 65, फिर सेकंड स्पीड रहेगी 75 और लास्ट स्पीड रहेगी 85। तीनों ही स्पीड्स पे आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास नंबर 48 है ये एक तरह से। इसके अंदर हम पहले 65 पे लिखने वाले हैं। मैं आपको गेट रेडी 3 2 1 ऐसे करके स्टार्ट करवाऊंगा और डिक्टेट करूंगा 65 WPM पर। 1 मिनट में 65 वर्ड्स जो है वो आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज, अगर इसको आपने 8-10 बार प्रैक्टिस नहीं किया है, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख करके लिखने की कोशिश कर रहे हो, मत लिखो, कोई काम का नहीं है। 8-10 बार प्रैक्टिस करके आए हो तभी लिखना, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसा लगेगा आप कोई काम कर रहे हो, आप कुछ मेहनत कर रहे हो, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बेटर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि 10 बार प्रैक्टिस करके आए हो तभी लिखिए, तभी कुछ बात बनेगी। ठीक है, चलिए get ready, 3 2 1 start. Truth has been divided into three kinds: truth above things, truth of thought about things, and truth in the accurate expression of thought about things. Full stop. According to ancient authorities, truth could be said to be a correspondence between thought and thing. Full stop. It seems perfectly easy for anyone to think accurately about a thing with which he is quite well acquainted. Full stop. But the case is not quite so simple as that, and there is without doubt a great deal to be said before it can be called simple. Full stop. Suppose an unfortunate accident occurred in a London street and that six people witnessed the accident and were asked to relate exactly what had happened. Full stop. It is quite certain that we should receive different accounts from each of them. Full stop. The result would not be a correspondence between thought and the thing thought about, and so the statements would not be true. Full stop. It is to be regretted that limited space prevents a more extended argument, though we could extend it if we cared to do so. Full stop. It has been maintained that certainty does not admit of degrees of any kind, that there can be no shade of difference in the intensity of our certainty. Full stop. But let us see. Full stop. A man may be certain that he settled his debt with his tailor on the 10th of October and in cash, or that
he paid his local rates on demand, full stop. But is this certainty equaled by the certainty with which he knows that 3 and 4 make 7, or that heat will melt butter, question mark? Is there not a great difference? Stop. ठीक है, ये 65 की स्पीड पे था। अब जिन लोगों का इस पे बहुत सारा छूटा है, अगर 10% से भी ज़्यादा छूटा है, अगर अपन माने इसको, ये कितने वर्ड्स हैं, 268, हाँ 260 वर्ड्स अगर हैं, 260 में से अगर 10 वर्ड से ज़्यादा अगर आपके छूट गए हैं मतलब कि आपने लिखे हैं और समझ में नहीं आ रहे, उसको छूटा हुआ नहीं मानेंगे। अगर लिखे ही नहीं हैं कि भाई आपसे तो ये बने ही नहीं, इसका मतलब आपने 10 बार प्रैक्टिस नहीं करी है। और अगर आपने लिखे हैं, थोड़े बहुत गंदे बन गए लेकिन हाँ बन गए, तो फिर ठीक है, फिर आप इसको आगे लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी पहले इसको 65 पे एक बार और लिखिए। जो वर्ड्स गंदे बने हैं वो अच्छे बनने लग जाएं, ये ध्यान रखना है आपको। अगर वो अच्छे नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब अभी तक हैबिट में नहीं आए हैं या उतनी प्रैक्टिस से नहीं हो पाया है आपका काम। तो इसीलिए एक बार और लिखिए अगर गंदे बन रहे हैं, और एकदम अच्छे बने हैं तो डायरेक्टली 75 पे आप लिख लीजिए। ये 3 ही कंडीशंस हो सकती है, तीनों कंडीशन पे मैंने क्या क्या करना है वो आपको समझा दिया है। लिखिए अब इसको आप 75 पे, तो 10 WPM बढ़ जाएगी स्पीड। इसको आप लिखिए, स्टार्ट करते हैं। गेट रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। Truth has been divided into 3 kinds: truth about things, truth of thought about things, and truth in the accurate expression of thought about things, full stop. According to ancient authorities, truth could be said to be a correspondence between thought and thing, full stop. It seems perfectly easy for anyone to think accurately about a thing with which he is quite well acquainted, full stop. But the case is not quite so simple as that, and there is without doubt a great deal to be said before it can be called simple, full stop. Suppose an unfortunate accident occurred in a London street, and that 6 people witnessed the accident and were asked to relate exactly what had happened, full stop. It is quite certain that we should receive different accounts from each of them, full stop. The result would not be a correspondence between thought and the thing thought about, and so the statements would not be true, full stop. It is to be regretted that limited space prevents a more extended argument, though we could extend it if we cared to do so, full stop. It has been maintained that certainty does not admit of degrees of any kind, that there can be no shade of difference in the intensity of our certainty, full stop. But let us see, full stop. A man may be certain that he settled his debt with his tailor on the 10th of October, and in cash or
that he paid his local rates on demand, full stop. But is this certainty equaled by the certainty with which he knows that the 3 and 4 make 7, or that heat will melt butter, full stop? Is there not a great difference, full stop? ठीक है, ये आपका 75 था। अब इसमें कुछ कुछ लोग जो है वो गलतियां कर रहे होंगे कि भाई छूट रहा है तो रबड़ से मिटाने वाली गलती हो रही होगी, या छूट रहा है तो टेंशन हो रही होगी कि भाई नहीं हमें मत लिखवाओ, हम वापस से लिखेंगे, वापस डिक्टेट करो। ये स्टार्टिंग में माइंडसेट रहता है, क्योंकि हम स्कूल से निकल के या कॉलेज से निकल के ये चीज़ कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें अब जो है जो छूट गया है उसके लिए वापस डिक्टेट करवाएं। तो वापस डिक्टेट नहीं होगा, जो डिक्टेट हो गया है वो एक ही बार डिक्टेट होगा। यही टेस्ट है कि एक ही बार डिक्टेट होगा और आपको पूरा लिखना है। तो अब अगर छूट गया है तो क्या करना है? तो छूट गया है तो जो जहां से आपको लिखने में आ रहा है वहां से लिखना है आपको। जो छूट गया है उसको छोड़ दीजिए। अब छूटना बंद कब होगा? जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अभी एक चीज अभी से ही क्लियर कर लो, पिटमैन की बुक खत्म करने का मतलब ये नहीं होगा कि आप एग्जाम के लिए तैयार हो। एग्जाम के लिए तैयार आप नहीं होगे, अभी सिर्फ आपको पता है कि गाड़ी में कहाँ पे क्या चीजें हैं, कौन सी चीज से ब्रेक लगता है, कौन सी से रेस होती है और गियर्स क्या होते हैं। गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस आपकी बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-3 महीने और लगते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। वो आपको मैं बाद में जब आपका कोर्स खत्म होएगा उसके बाद में और डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन आप ये मत समझ लेना कि 120 तक एक्सरसाइज अगर हमने कर ली है या 100 एक्सरसाइज कर ली है तो हमें अब सब कुछ आ गया है। आपको सिर्फ वर्ड बनाना आया है, आपको डिक्टेशन लिखना नहीं आया है। डिक्टेशन लिखना, वर्ड बनाना, ये दो अलग चीजें हैं। अभी हम जो पिटमैन है उसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में डिक्टेशन लिखना हम सीखेंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है, और वो प्रैक्टिस से होगा। वो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर है। वो ही चीज स्टार्टिंग से है, वही चीज आगे भी रहेगी। ठीक है, ये आपने 75 पे लिखा है, अब हम इसको एक बार और लिखेंगे 85 पे। ठीक है, तो ये थोड़ा और तेज होगा। 75 पे हाँ सुन लो, अगर बहुत सारा छूट गया है तो दोबारा लिखिए, दोबारा भी छूट जाए तो तीसरी बार लिखिए। यूट्यूब पर आप वापस से सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार सुन लीजिए, 3 बार के बाद छूटना बंद हो जाएगा। अगर 3 बार के बाद भी छूट रहा है इसका मतलब फिर वही वापस से कि आपने 10 बार प्रैक्टिस ही नहीं करी है। ठीक है, चलिए अभी अपन इसको 85 पे लिखते हैं। गेट रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। Truth has been divided into 3 kinds: truth above things, truth of thought about things, and truth in the accurate expression of thought about things, full stop. According to ancient authorities, truth could be said to be a correspondence between thought and thing, full stop. It seems perfectly easy for anyone to think accurately about a thing with which he is quite well acquainted, full stop. But the case is not quite so simple as that, and there is without doubt a great deal to be said before it can be called simple, full stop. Suppose an unfortunate accident occurred in a London street, and that 6 people witnessed the accident and were asked to relate exactly what had happened, full stop. It is quite certain that we should receive different accounts from each of them, full stop. The result would not be a correspondence between thought and the thing thought about, and so the statements would not be true, full stop. It is to be regretted that limited space prevents a more extended argument, though we could extend it if we cared
to do so, full stop. It has been maintained that certainty does not admit of degrees of any kind, that there can be no shade of difference in the intensity of our certainty, full stop. But let us see, full stop. A man may be certain that he settled his debt with his tailor on the 10th of October and in cash, or that he paid his local rates on demand, full stop. But is this certainty equaled by the certainty with which he knows that 3 and 4 make 7, or that heat will melt butter, stop? Is there not a great difference, full stop? ये 85 था। बहुत सारे एग्जाम 80 पे होते हैं और इसी टाइप की स्पीड एग्जाम में आती है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे वर्ड्स ज़्यादा होते हैं, ये तो आपके 250 के आसपास ही वर्ड हैं। वहाँ पे 800 वर्ड, 1000 वर्ड, 500 वर्ड, अलग अलग एग्जाम पे अलग अलग वर्ड्स होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये वाला चैप्टर का जो आपका डिक्टेशन है वो हमने लिख लिया है 85 और 86 नंबर की एक्सरसाइज का। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। ये वाला डिक्टेशन 85 पे आपको 4-5 बार लिखना पड़ेगा। 5 बार लिख दीजिए, इसके अंदर छूटेगा ज़रूर लेकिन लिखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपने आज तक 85 की स्पीड पे सुना और लिखा है ही नहीं। तो एक बार बार सुनोगे तो आपको हैबिट बनेगी कि हाँ ऐसा ऐसा 85 होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। कोई डाउट रहे तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।